Assalamualaikum and welcome to another episode of Flavors. जैसे कि मैंने आपको बताया था, today we have a guest with us. I'd firstly like to tell you the outfit that I'm wearing is by our guest, and I'm going to wait on telling you. जिन लोगों ने उनका नया collection देखा है, then you obviously know who I'm wearing. But he's going to be joining us today, and he actually enjoys food a lot as well, not just designing. I've seen his clothes; they're absolutely beautiful, very detailed, very well done. आज I'm making 3 very delicious recipes for you. आज हम लोग एक Italian sausage and potato salad बना रहे हैं. उसके अलावा we're making beef skewers with a delicious creamy wasabi dip, and our third recipe for today is a chocolate mousse, but a very fast chocolate mousse. ठीक है, मैं सबसे पहले chocolate mousse बनाना चाह रही हूँ because normally जब आप घर पे ये बनाएंगे you have to make sure you refrigerate it for at least 2 hours before you serve it to your guests. Now for this basically I'm using semi sweet chocolate. आराम से आपको chocolate मिल जाती है, cooking chocolate आप यूज़ करना चाहें, पर याद रखें जब भी आप cooking chocolate का इस्तेमाल करें, make sure you use 70% cocoa solids cooking chocolate. I'm actually going to pull up the sleeves on this. Let's make it a little more work friendly. But basically what you're going to do is आपने 70% cocoa solids or what you call semi-sweet cooking chocolate इसके अंदर इस्तेमाल करनी है. Remember, whenever you're making a mousse, a cake or any dessert, even a mousse or a souffle more than anything else, the quality of chocolate affects the texture of the dessert as well as the flavor. तो अगर आपको bitter chocolate पसंद है, then I recommend 75 to 80% cocoa solids. But if you like regular chocolate, तब भी आप इसके अंदर 70% cocoa solids कम से कम chocolate इस्तेमाल करेंगे. Basically this is a water bath. As you know, आप देख रहे हैं पानी is actually at the base. You have to make sure जो bowl का base होता है that should not come in contact with the water. तो जब आप इस तरीके से bowl place करेंगे, you're locking steam but the bowl is not getting wet. अगर bowl wet हो जाएगा तो it will burn the chocolate. Basically this is about 250 grams or 8 ounces of semi-sweet chocolate. Just quickly put it in here so that it melts. इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे some butter. Now normally if you were using per se a Swiss premium or a Belgian cooking chocolate, then what's going to happen is that you won't need to add that much butter. But basically जो आपको cooking chocolate पाकिस्तान में मिलती है, unless and until you invest in the expensive chocolate, it's necessary to add butter to get the same texture. याद रखिए, the higher the quality of chocolate, the butterier, the creamier the chocolate. आप देखें premium chocolate जो होती है, if you keep it outside, it literally melts. And a normal candy bar chocolate, it doesn't melt for normal temperature. Kitchen में भी आप रख दें तो बिल्कुल पिघलती नहीं है. What happens is that it just becomes soft. But good quality chocolate completely melts off. ठीक है? Now this is basically, as I told you, 8 ounces chocolate. To this I'm adding butter. Now this is salted butter. I'm going to add about 2 nice tablespoons of butter and give this a stir ताकि ये mix हो जाए. इसके अलावा हम इसके अंदर add करेंगे पानी, but that is once the chocolate has melted. मेन थिंग आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप वाटर बाथ क्रिएट करते हैं, the flame should never come up on the sides. It should always stay beneath the pan. अगर flame यहाँ आएगी तो whatever you are melting in that water bath will get burnt. The whole idea water bath को इस्तेमाल करने का ये होता है that chocolate is a very delicate ingredient. अगर आप इसको directly एक saucepan में melt करेंगे, chances are that it's going to melt. It's going to burn. Sorry, not melt. Obviously going to melt, but it's going to burn in the process. Same thing with when you're making a souffle or a custard जिसके अंदर और a pudding जिसके अंदर बहुत ज़्यादा egg yolks हैं, जिससे गाढ़ापन आता है basically. अगर आपने you sort of don't do it on a water bath, chances ये है कि जितनी जल्दी आपका custard पकेगा उतनी जल्दी curdle कर जाएगा. There's just a minute's time difference or a few seconds between a custard being cooked or a pudding being cooked and curdling. इसलिए it's always more wise to use a water bath. Alright, let's stir it up. एक और चीज़, chocolate को please एक जगह मत छोड़ दीजिए and walk away. It will burn. You have to keep stirring it and you've got to ensure that evenly heat distribute हो रही है. आज का सवाल अब is quite a interesting one, huh? Let's see how many people get this right. In a chocolate mousse cake, alright, now we've all had chocolate mousse cake. What does the mousse account for? Is it the cream? Is it the foamy part? Or is it the sponge or biscuit base at the bottom? So is it the cream, is it the foam, or is it the sponge?
or biscuit base or whatever you want to call the base, is it what part of the chocolate mousse cake is the mousse? आप अपना जवाब SMS के ज़रिए दे सकते हैं, कॉल करके दे सकते हैं, and one lucky winner today will receive a gift from Adnan as well. So that's why please start SMSing and calling in. He's going to be joining us very soon. And I actually told you who our guest was, so now I'll go on to tell you. हमारे जो आज guest हैं, that's Adnan Pardesi. I'm sure all of you know he's just done a successful fashion week in Lahore. And there is a fashion show that's happening now also at the middle of the month. I think it's the 17th, if I'm not wrong. We'll talk more about it. जो Cancer Foundation को support करता है, which is a very good cause. And he's showing there as well, and I'm actually wearing one of his outfits from the Lahore Fashion Week collection. It's very comfortable and I love the way it flows. चलें, let's quickly melt this chocolate. It's nearly done. मैं यहाँ अंडे separate कर लेती हूँ तब तक. Let's move our chopping board aside and let's grab some eggs. Break का time भी आ गया है. ओहो. अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ egg separate करती हूँ. आप लोग जहाँ एक झटपट break पे don't switch the channel. We'll just be back. चॉकलेट मूस, स्वीट चॉकलेट 8 आउंस पानी, 4 खाने के चमचे मक्खन के टुकड़े, 2 खाने के चमचे अंडे, 4 वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 चाय का चमचा हेवी क्रीम, 6 खाने के चमचे टार्टर क्रीम, 4 चाय का चमचा कास्टर शुगर, 3 खाने के चमचे। Some masala to your life. चॉकलेट मूस, स्वीट चॉकलेट 8 आउंस पानी, 4 खाने के चमचे मक्खन के टुकड़े, 2 खाने के चमचे अंडे, 4 वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 चाय का चमचा हेवी क्रीम, 6 खाने के चमचे टार्टर क्रीम, 4 चाय का चमचा कास्टर शुगर, 3 खाने के चमचे। Welcome back after the break. You're watching Flavors and I've separated the eggs. Basically these are 4 eggs. 4 अंडे हम इस्तेमाल कर रहे हैं for the chocolate mousse. ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ मैंने 8 ounce along with 2 tablespoons of butter melt किया था. I'm just going to add some water आपके सामने ही. Just gonna add a little bit of water. मैंने पहले इसलिए नहीं add किया because remember water freezes chocolate as well. So you don't want to add it initially. You want to add it after you've melted it. That's it. Put this back. एंड यहाँ इसको स्टर करके बिल्कुल कंबाइन कर लीजिए अच्छे तरीके से. इससे जो हीट होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. बिकॉज याद रखिए जब भी आप अंडे में शामिल करते हैं गरम चॉकलेट, द एग योक्स विल कुक. तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट आप हीट उसकी डाउन कर लीजिए. गरम गरम मेल्टेड चॉकलेट ऊपर से मत डालें. सी लुक परफेक्टली वेलवेटी melted chocolate. Okay, here what I'm going to do is these are the egg yolks. इसके साथ हम शामिल करेंगे कास्टर शुगर. कास्टर शुगर बेसिकली पिसी हुई चीनी होती है. आप घर पे पीस सकते हैं. इफ़ यू वांट टू यू नो बाय रेडी कास्टर शुगर, आप वो भी ख़रीद सकते हैं. व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. नॉर्मली यू कैन जस्ट यूज़ अ कॉफ़ी ग्राइंडर एंड इट डजंट टेक टू मच टाइम और टू मच एफर्ट. About I'm going to add 5 tablespoons, but मैंने 6 tablespoons. Looking at the desi palette, people like their desserts a little sweet here, but I don't like it overly sweet. याद रखें मीठा should be मीठा, but not tooth achingly sweet. It shouldn't bother you. The sweet shouldn't get to you. You should be able to enjoy it and eat it. And it's like मिर्ची. अगर आप सालन में मिर्ची ज़्यादा डाल देंगे तो उससे होता है ये कि आपका जो पैलेट है वो बिल्कुल नम हो जाता है. So you don't taste anything after that. Alright, whisk it up. इसको अच्छे तरीके से आप बीट कर लीजिए. मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट. अगर आपको यू डोंट गेट इट देन यू कैन ऑलवेज यूज़ वनीला एसेंस, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. एक और चीज़, आप इसी रेसिपी में पेपरमिंट एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं वनीला एसेंस की जगह टू गिव इट अ मिंटी फ्लेवर. इफ़ यू लाइक मिंट चॉकलेट लाइक आई डू, यू कैन ऑलवेज गिव इट अ मिंटी फ्लेवर. देखिए जैसे आप इसको बीट करते हैं इट बिकम्स अ लाइटर कलर, अ पेलर येलो. आज का सवाल एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. आज का सवाल ये है दैट व्हेन इन अ चॉकलेट मूस केक
What does the mousse account for? Mousse का लेयर क्या होता है? क्या वो फोम होता है, क्या वो क्रीम होता है, या क्या वो स्पंज होता है? आप अपना जवाब SMS के ज़रिए या कॉल करके हमें दे सकते हैं, whatever you find convenient. Alright, there we go. It's light and fluffy. Now to this I'm adding vanilla extract. Now I'm using pure vanilla extract. Actually I got some, my parents actually got me this really nice vanilla extract from Sri Lanka, and it smells so lovely, and the flavor that it brings to dessert is just absolutely phenomenal. देखिए एसेंस जो होता है वो एक्चुअली सिंथेटिक होता है. एक्सट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्चुअली एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द vanilla bean. That's the difference. That's why it's so much nicer in fragrance and flavor. अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे ये मेल्टेड चॉकलेट. Gonna grab my spatula. First let's whisk this in. क्योंकि चॉकलेट थोड़ी गर्म थी. एक चीज़ याद रखें, अगर थोड़ी सी भी हीट होती है, you got to make sure अंडे में शामिल करते कि साथ ही you have to start beating. Look at that lovely velvety chocolate color. Okay, we've got Ruby from Saudi. तो एक सेकंड मैं ज़रा अपनी beating रोक दूँ because we don't want to put her on hold. Hello, अस्सलाम वालेकुम Ruby. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. Look very fresh, always fresh. Thank you so much. Thank you. आज के सवाल का जवाब? फोम. ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया. कोई फरमाइश रूबी? चॉकलेट मूस की करनी थी. चॉकलेट मूस वो तो मैं बना रही हूँ अभी तो सोनी देख रहे हैं. Oh, thanks a lot. Thanks a lot. Oh, where's my spatula? Okay. Thank you. You're welcome. Office. Ruby, you should be watching the show. You didn't know I was making chocolate mousse. You know, next time मैं काम करूँगी जो weekly slides है ना, I'm gonna literally make them double the ratio and the number of times that they appear, because how could you, एक हफ्ते तक मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को, because obviously mine is a weekend show, so I only get to spend 2 days of the week with you all. तो इसलिए I try that जितना हो सके आप लोग को पता हो मैं क्या बना रही हूँ, so that you can follow the recipes and enjoy them. I'll grab the spatula from here because I'm going to need this. Right now, you don't understand how tempted I am to take that chocolate off. But if I was at home, I mean, what happens in the kitchen stays in the kitchen. चलिए इसको अच्छे तरीके से बीट कर लीजिए. You want it to combine nicely. ये देखिए जैसे मैंने जर्दी में चॉकलेट शामिल की है. Look at the thickness. That's because the chocolate was warm. It's almost like when you're cooking a custard and giving it a light heat. Just look at the texture, how velvety, how rich it is. अच्छा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम. ठीक है, I'm gonna stop beating this and we're gonna take cream and we're going to whisk it. This is about 6 tablespoons of जो आप, if you don't live in Pakistan, जो Tetra Pak cream आपको पाकिस्तान में मिलती है, that's perfect. But if you don't live in Pakistan, just to tell you, this is double cream. And basically आप 6 tablespoon इस्तेमाल करेंगे. Just whisk it up so that it gets like an even creamy texture. I actually like adding sour cream to my chocolate mousse as well. It's a lovely flavor combination. आप कभी try कीजिएगा. It tastes really good, and even when you're serving this mousse, just to get rid of the sweetness, serve it with some sour cream or some creme fraiche, and it tastes really good. Break our time. Oh, I quickly want to do this because then we have to put the mousse in the fridge to set and go on with the rest of our recipes. जल्दी से ये cream में शामिल कर दूँ. You just want to give it a light whisk to make it lighter. Okay. Now you add this to your chocolate. Let's put this aside. And इसको आप अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे. Now let me tell you what I'm going to do when you're on a break. I'm beating this. ये तो यहाँ तैयार हो गया. अब मैं क्या करूँगी कि ये बीटर के हैंडल्स जल्दी से साफ़ करके, you want absolutely clean handles. आप इसके जो एग वाइट्स हैं वो बीट करेंगे. इतना बीट करेंगे कि वो फोमी हो जाएं, और फिर उसके अंदर एक चुटकी क्रीम ऑफ टार्टर, 1/4 चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर बेसिकली शामिल करेंगे. एंड आप उसको इतना बीट कर लेंगे कि वो स्टिफ पीक्स हो जाए. ऑब्वियसली इट्स गोना टेक मी अबाउट 3 minutes to do that, so you'll probably be back from the break. झटपट एक ब्रेक पे जाए. Don't switch the channel, we'll just be back.